Hi friends, welcome to my channel Spanish Made Easy by Purvi. So today's video is all about how to tell the time in Spanish. So when you are talking about time, the first thing that you need to remember is numbers. क्योंकि टाइम बोलने के लिए हम लोग को नंबर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए. हम लोग स्पेनिश में हर एक नंबर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसका स्पेलिंग क्या होता है. इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कि आप नंबर्स में एकदम थॉरो हो जाए, आपको नंबर्स एकदम अच्छे से आ जाए. तब आप इस टाइम वाले वीडियो को देख के आप ये याद कर सकते हैं कि टाइमिंग्स को कैसे बोला जाता है स्पेनिश में. सो टू स्टार्ट द टाइम, फर्स्ट वी नीड टू आस्क द क्वेश्चन. पहले हम लोग को ये सीखना है कि हम लोग को टाइम कैसे पूछना है लोगों से. अगर आप स्पेनिश में किसी को टाइमिंग्स पूछ रहे हैं तो आप क्या क्वेश्चन यूज करेंगे या सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे. सो वी विल आस्क ¿Qué hora es? It means what hour is it? ¿Qué hora es? Two question marks. One is the inverted one and the other one is at the end. And hora, it is not hora, it is hora because H is not pronounced in Spanish. ¿Qué hora es? Or you can also ask ¿Tiene hora? But there are simple rules that you need to follow before going on to the timings and before starting off with my lessons. The rule is number 1. Always use the verb ser whenever you are talking about timings. For example, अगर मैं बता रही हूँ it's 2 o'clock in the morning, so use son las 2 de la mañana. Son is ser. It is coming from the verb ser. तो हम लोग या तो son use करेंगे या s use करेंगे. So always use the verb ser. देन रूल नंबर 2 है कि हम लोग को हमेशा फेमिनिन आर्टिकल यूज करना है. जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम, इट इन स्पेनिश इट इज ओरा, ला ओरा. तो ये एक फेमिनिन वर्ड है ला ओरा. सो वी विल ऑलवेज यूज द टर्म लास, लाइक ला और लास, सोन लास और एसला उना, son las 2, son las 3, son las 4. हम लोग ऐसे ही करके पूरे टाइमिंग्स को बोलते हैं. एंड देन वी कम टू रूल नंबर 3. जब भी हम लोग 1 o'clock बोल रहे हैं, लाइक इट्स 1:15, इट्स 1:20, इट्स 1 o'clock, तो जब भी 1 o'clock आएगा इट्स द सिंगुलर नंबर. तो सिंगुलर नंबर में वी विल यूज एस, वी विल नॉट यूज सोन बिकॉज वो एक सिंगुलर नंबर के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट. तो वी विल यूज एस. Es la una y 4, es la una y media. तो ऐसे करके हम लोग 1 o'clock या 1:30 या 1:45 हम लोग हमेशा एस ही लगाएंगे 1 o'clock के आगे. एंड 2 o'clock 3 o'clock ये सब प्लूरल है तो वी विल यूज सोन. सो दीज आर 3 सिंपल रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो. अब वी विल स्टार्ट विद आवर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि टाइमिंग्स कैसे बोले जाते हैं स्पेनिश में. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो नाउ 1 o'clock को स्पेनिश में कैसे बोलते हैं. 1 o'clock इज es la una. तो जस्ट नंबर मेंशन करना है, आर्टिकल मेंशन करना है एंड द वर्ब मेंशन करना है. सो es la una. ¿Qué hora es? Es la una. That's it, es la una. 3 o'clock. 3 o'clock को son las 3. That's it. यहाँ पे s लगा है because it's singular. 1 o'clock as I've already mentioned in the rules. And the tres is the plural number, तो हम लोग यूज करेंगे son las 3. 4 o'clock son las 4. 5 o'clock son las 5. 6 o'clock son las 6. 8 o'clock son las 8. बट आवर्स आपने सीख लिए यहाँ पे. बट आई नो कि टाइम इज नॉट ओनली अबाउट आवर्स. उसमें 1:45, 1:15, हाफ एन आवर, उसमें और भी बहुत कुछ होते हैं. तो हम लोग आगे देखते हैं कि टाइमिंग को कैसे बोला जाता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जब भी हम लोग हाफ एन आवर बोल रहे हैं स्पेनिश में, लाइक इट्स 3:30, हाफ एन आवर, तो उसमें हम लोग फ्रेज यूज करेंगे मिदिया. स्पेनिश में हम लोग बोलते हैं मिदिया.
जब भी हम लोग क्वार्टर पास्ट यूज करेंगे, इट्स लाइक 1:15 और 2:15 और 3:15, तब हम लोग यूज करेंगे क्वार्तो। एंड जब हम लोग जैसे बोलते हैं 4:45 या 5:45, 6:45 और से 7:15, 7:15, तब हम लोग यूज करेंगे मेनोस क्वार्तो। दीज आर सिंपल ट्रिक्स जो हम लोग इसको याद करके हम लोग टाइमिंग्स बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। सो हाफ एन आवर को मिडिया बोलते हैं स्पेनिश में, मिडिया। क्वार्टर पास्ट को cuarto बोलते हैं। Don't get confused between cuatro and cuarto. One is the number 4 and the other one is the quarter past. So cuarto and quarter to को हम लोग बोलते हैं menos cuarto. So 9:30, 9:30 को स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? It's 9:30. 9:30 को बोलेंगे son las 9:30. Son las 9:30. 1:15. Es la 1:15. Es la 1:15. 4:45. Son las 5:45. I will ask you, or now if I'll ask you like it's 9:30 in the morning, so we will use son las 9:30 de la mañana. It's 1:15 in the afternoon. Es la 1:15 de la tarde. It's 4:45 in the evening. Son las 5:45 de la tarde. So tarde is evening. There are two meanings of tarde. One is late and the other one is the evening. So son las 5:45 de la tarde. Ask it's 9:30 at night. You would say son las 9:30 de la noche. De la noche. Noche is night. Son las 9:30 de la noche. Now tell 8:50. 8:50 son las 9 menos 10 minutos. It means there is 10 minutes left for 9 o'clock. Son las 9 menos, like minus, 10 minutos. 10 minutes. 5. Son las 2:05 minutos. Son las 2 hours 5 minutes. Son las 2:05 minutos. 4:35. Son las 4:35 minutos. So just remember the numbers and this is how you tell the timings in Spanish. So इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर का भी वीडियोस के लिंक डाल दूंगी जो मैंने बनाया था। एंड देन द वर्ब सेर को कैसे कॉन्जुगेट किया जाता है उसका भी वीडियो मैं नीचे लिंक बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उससे लर्न करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।